So, guys, next we have Deepika. Hi, Deepika, how are you? Hi, Garima. How are you? And hello, everyone. Hello, all the jury members, ma'am, and the other participants as well. Hi. Deepika, you can start with your introduction. My name is Deepika Gulia, and I was born in Haryana and brought up in Delhi. I have recently completed my DLED, which is a diploma in elementary education, which is done after completing the 12th standards. And with my DLED, I am also pursuing psychology honors through open learning because we cannot pursue two regular courses together. So DLED was for 2 years, and my 1 year is left for my graduation. And right now, I've also filled my postgraduate in psychology. So I'm waiting for the CUET. And with that, I also happen to be a professional makeup artist because I had 1 year, this 1 year till my graduation to complete. So I thought of uh, improving my skills and developing some new skills. So I was there to complete all my creativity, my arts, and to complete these small dreams or my interest I have. So abhi, I am also doing few courses like for digital marketing or few courses which I have interest in. Okay, Deepika. So, what was the reason behind joining for beauty pageant? As you are a makeup artist and you Yeah. participated for Miss India 2025. So, what was the reason behind participating for this pageant? Firstly, actually, as I have seen your journey as well, this is a major problem that modeling is for girls who are tall, who are good looking, and most importantly, somehow it is there that also for fair girls, you know, for who have fair skin tone, that somehow this exists, this still exists even though we have so many brown skin winners, but still this thing is there. And you're not tall enough, you don't have that toned body shape and that fair skin. And for me also, that somehow was a drawback because I'm not that much tall, and of course I'm not that much fair. But uh, we got in touch with Garima and her pageant. I worked for her uh, in past, and then we saw and got to know that there are pageants who host such pageants where women, irrespective of their age, height, or what they are doing, or their housewives or their professionals, but we can be at one stage and we can complete that dream of being a model or winning a pageant like this, irrespective of our heights or our color, or we're married or not, or our professional status. And if we have a dream and we can complete it, and it is very motivational as well that there are pageants like this who only support women as special, that every woman is special. They have equal rights. And there are people who promote these things, because even though it is said in constitution everyone is equal, but still we can see the condition of women in India, and not only in India, in many other developing countries or even developed countries. So I thought that this is my chance and I should be here. I already regret that I wasn't here when I was a teen, otherwise I would have participated in that too. But I'm across a year than teen. I'm 20 right now, so I mean almost 21. So I thought that maybe not in teen but in Miss India I can work here and go through. Okay, that's really good, Deepika. And yes, you have worked with my agency as a makeup artist. So no doubt you're a really sweet girl and you totally deserve to be in this field, obviously. Before also I told you that you need to try for this pageant, obviously. So further, Deepika, Margaret would be connecting with you. Hi, Deepika. Hello ma'am, how are you? I'm fine. What about you? I'm very good. I'm so happy to see you all. Me too. So, Deepika, can you tell me what are your hobbies? Ma'am,
I am really, I'm a very kind of creative person and who loves being around or being around colors, being around brushes. So I love painting, I love artwork, I love creativity, I love drawing and different kinds of uh, creative things like molding or poetry and different art forms basically which have colors in it. I don't like anything that is too sober or too dull. I like creativity and colors. I can't sit idle. I have to mold something useless into something creative and something that can be used. So I Okay. love painting, drawings and everything. That's good. So what are your goals, Deepika? Ma'am, well, my goals are spread in a very vast areas. I have, I have many things and I keep them noted that I want to achieve these things. Especially, I'm very young to say this, but I have very huge interest in politics, and I really want to pursue this. Seeing the condition around our country itself, you know, I really want to work for. If I say that in India or even world, the two most major things, and you know, people are hard with and harsh with, and the cruelty happens are with kids and with women. If we see, you know, सिर्फ यही दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे सबसे ज्यादा आई वुड से इतने डिप्राइव्ड रहते हैं हमेशा किड्स एंड वुमेन सबसे ज्यादा पुअर कंडीशन में हमारे कंट्री में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली दीज टू human god creatures are there. If we see child prostitution, rape and abuse, kidnapping, सबसे ज्यादा दे आर विद किड्स एंड women. Women का तो है ही, इन किड्स ऑल्सो फीमेल्स. फीमेल इज अ मेजर पोर्शन जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रुअल्टी वी कैन सी majorly, be it prostitution, be it kidnapping, or be it workplace abuse or anything, and with kids as well. You know, I think these three, kidnapping, abuse at workplace or at home, and prostitution, these three are major problems I see, which is there in India and outside. So I think my two big goals are to eliminate these three things. Okay, that's nice. At this very young age, you are thinking very maturely. That's proud of you. Thank you, So, ma'am. Deepika, if you win the crown, what would your first step be towards women and children, as you have said? Now, one major thing I would, in this starting, I would say is that to do anything, we need to have that power. And if I win this crown, I'll make sure that first of all, we can put some petitions for children and women's safety. And especially if we see in last 3 years, I always read newspapers. So there are always news like, you know, rape in Delhi or in NCR. So I think I would start from my own city. I reside in Delhi, so I think I would put a petitions for their safety, especially putting and construction of heavy digital device for the camera settings all over the city in Delhi. So that recently there was a news days before that a woman took a cab to go home and it was 1:30 around and the Ola driver suddenly stopped at some unknown road, you know, and it was almost 1:30 at night. So there are SOS systems in Ola cabs, but actually when she sent that SOS system, it didn't work. So I think we need heavy digital system for cameras all over, and that SOS systems work really very fast and they're effective as well. Not that कि एसओएस सिस्टम पे हमने प्रेस किया, अलार्म्स जा रहे हैं बट नो वन इज वर्किंग, कोई देख ही नहीं रहा कि किसी को सही में जरूरत है या नहीं है. तो हमें एक ऐसा डिजिटल सिस्टम चाहिए कि हर जगह कैमराज हैं एंड वो इतने अच्छी क्वालिटी के कैमराज है कि हमें एसओएस सिस्टम में भी भेजने की जरूरत ना पड़े. दे कैन कैप्चर दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग अराउंड.
and there is a rescue team or a saving team that can be there on time before something wrong happens. So I think this one, I would start with this one thing, and then we can Okay. go on the rest. Yeah, that's nice. I think you may be small in age, but your thinking is very mature. That's so nice of you that at this very young age you are really, even I am listening, I am inspired by you. Oh, So thank you, ma'am. Actually, it's all because of reading newspapers every day. yeah, that is very important, I think. Reading newspaper and seeing news nowadays and learning from those things, because many things are happening nowadays. We can't say, we have to think of our own safety. Like we can't, Yes, ma'am. present mind is very important, I think so. Thank you, ma'am. Okay, nice meeting you, Deepika. Now Nazmi ma'am will connect with you further. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मार्गरेट। दीपिका ने इतना कुछ कह दिया है तो सिर्फ मैं एक चीज पूछना चाहूंगी दीपिका से, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट है। जैसे कि Yes, ma'am. इतना कुछ होता है वुमेन्स के साथ, दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है, और Yes, ये सब ma'am. जो पर्सन कहते हैं तो वो कभी भी कोई स्टेप उठाते नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट होता है कि हाँ ये ऐसा होगा, बट होता नहीं। अगर आप एज अ पॉलिटिशियन हो तो आप वहां पर से ऐसे सिस्टम में से क्या चीज इरेज करना चाहेंगे और अपनी तरफ से ऐसी क्या चीज ऐड करना चाहेंगे जिससे लोगों को सुरक्षा मिल सके? मैम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। रिसेंटली एक तो मैं ये चीज हटाऊंगी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो एक मैं लाइक किसी पार्टी को मैं ऐसा बुरा नहीं दिखाना चाहूंगी इधर, बट एक चीज है कि दिल्ली में कि विमेन के लिए ट्रैवल फ्री है, या या एंड काफी चीजें और हैं जो कि मतलब फ्री कर दी गई हैं। आई थिंक इंसान काम करता है ये सोच के दैट वी हैव टू अर्न to get a good livelihood for ourselves, and to have a good life as well as a class, you know and एक अच्छा कि हमें, हाँ, हम कि हमारे पास एक अच्छा स्टैचर है वर्क करने के लिए, हम एक प्रोफेशनली बहुत सेट है। बट अगर हमें चीज फ्री में ही दे दी जाएंगी तो लोग काम क्यों करेंगे? एक तो करेक्ट। स्पेशली मुझे लगता है कि विमेन के लिए ट्रैवल फ्री करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किड्स के लिए ट्रैवल फ्री करें, क्योंकि हर रोज इतने बच्चे होते हैं जो हर रोज स्कूल उनको आना है, स्कूल जाना है। मुझे लगता है अगर हमें किसी के लिए फ्री करना ही है तो हम किड्स के लिए, स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए करें। फ्री करके क्या होता है कि आप सामने वाले से उसकी तरक्की करना, या जिस चीज में उसके पास एक ताकत है कि मैं इस चीज में आगे बढ़ना चाहूंगा, हम उससे वो चीज ही ले रहे हैं। क्योंकि हम काम करते हैं कि हाँ हमें ये चीजें पूरी करनी है, हमें ये चीजें हासिल करनी है। अगर वो हमें आगे से कोई दे देगा तो इंसान अपनी ताकत को ही नहीं पहचान पाएगा, तो वो आगे काम कैसे करेगा? तो इससे हम एक तरीके से सामने वाले को हेल्पलेस भी बना रहे हैं। तो मैं ये या चीजें हटाऊंगी एंड जितने हो सके इनफैक्ट उतने स्ट्रिक्ट रूल्स लेके लाना चाहूंगी, क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, ऐसा कहता है कि हिंदी वाली टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे उनका काम एकदम कंप्लीट करके रखते थे। हमारे स्कूल में ऐसा होता था, 9th स्टैंडर्ड में एक टीचर थी हमारी हिंदी की, एंड वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, तो जो बिल्कुल नॉटी से नॉटी बच्चा है, जो जिनकी कॉपीज कभी कंप्लीट नहीं होती थी ना, उन हिंदी की कॉपी सबकी कंप्लीट होती थी ऑन टाइम। तो आई थिंक या स्ट्रिक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा लूज छोड़ेंगे चीजें उतनी ही ज्यादा खराब होंगी, डिटोरिएट ही होंगी, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। एंड टुडे इज क्यों, आपको प्रोग्रेस करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एंड क्योंकि सेकेंडली वन थिंग वो इज, चीज यस मैम, कर वापस देना एक तरीके से यही चीज है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, मगर पीछे से ये चीज क्लियर होती है कि हम आपको कमजोर बना रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि मैम, वो निकल बेसिकली रही है, कमजोर करना है। जब वो बाहर निकल रही है तो वो कुछ कर रही है क्योंकि वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो कर रही है, मगर हम उनको ये चीज दिखा के कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, तो वो अपने आप को वीक समझने लगती है। वही उनका मोटिव होता है कि हम आपको स्ट्रांग बना के वीक दिखाएं। उनका एग्जैक्टली मैन, मैम। या आई लव योर आंसर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, आपके थॉट बहुत स्ट्रांग है। इतनी छोटी एज में आपकी ये जो विचार है बहुत अमेजिंग है। मैं काफी इम्प्रेस हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप अपना कैमरा एक जगह प्लेस कीजिए, और आपके पीछे की स्क्रीन ब्लर हो रही है तो पहले आप उसको भी सही कीजिए और अपना रैंप अप या प्रेजेंट कीजिए।
I'm visible, right? Yeah, Deepika. Shall I? Thank you so much, Deepika. You have a complete package. बहुत Ma'am, अच्छी actually, I personality है also, yeah, I won beauty and brain in my college as well, freshers में. आपकी। You have. तो आप वहाँ, हैं, आपकी हाँ सोच जी. काफी अच्छी है, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। अगर आप आगे जाते हैं तो आपका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आप जिस सोच के साथ आगे जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है आपकी एज की गर्ल्स में। क्योंकि आपकी एज की गर्ल्स जो होती हैं बस उन्हें सिर्फ क्या है, लाइक मॉडलिंग, मेकअप एंड ऑल बहुत कुछ होता है, जैसे कि सबको ये बुरा ना माने प्लीज, मगर ये चीज होती है। मगर जिस तरीके की सोच आज का ये जो माहौल चल रहा है, ऐसी सोच होना बहुत जरूरी है Yes, ma'am. गर्ल्स। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जरूर आगे जाएं दीपिका। Thank you, ma'am. So nice.